This is the second lecture in respiration and circulation. In last lecture and first lecture, with what we have completed was about larynx. Larynx, which is also called as voice box, and it contains vocal cords for the production of sound. This is larynx. ये जो यहाँ पर है, this is larynx, and this larynx contains vocal cord for the production of sound. In today's lecture, we'll talk about trachea. Trachea, it is nothing but it is also called as windpipe. It is also called as windpipe. Here you can see in picture, this is trachea. This is trachea. It is nothing but a hollow tube, a hollow long tube which measures about 10 to 12 centimeter in length. Okay, this trachea is supported by C-shaped 16 to 20 rings of cartilage which prevents them from collapsing. कोलैप्स होना मतलब बैठ जाने से बचाने के लिए it contains 16 to 20 rings of cartilage for preventing from collapsing. And this trachea is internally lined by a specialized cells which are known as pseudostratified ciliated epithelium cells, and they contain mucus gland also. This pseudostratified ciliated epithelium, they prevents the entry of unwanted particles from entering the lungs. Okay, this ciliated epithelium, what it does, it prevents the unwanted particle from entering the lungs. Okay, this trachea here, it divides into two branch and enters into each lung, so this branch which it enters the each lung, it is called as bronchi. It is known as bronchi, and these bronchi, depending upon their position, they are divided into three categories. The first category is known as primary bronchi, which is present here, and secondary bronchi, which is present here, and the tertiary bronchi, which is present here. On ending with the tertiary bronchi, there are some structures which are present here on the ending of each tertiary bronchi. These structures are known as bronchioles. And each bronchioles ends into a specialized structure. This is bronchiole. ये यहाँ से जो कंटिन्यूएशन पार्ट आ रहा है, ये ब्रोंकियोल का है, और ये ब्रोंकियोल एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में खत्म हो रहा है. वो जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है वो कहलाता है अल्वीओलाई. क्या कहलाता है? अल्वीओलाई. और ये जो अल्वीओलाई है, यही अल्वीओलाई आपके रेस्पिरेशन का जो अमल है वो परफॉर्म करने वाला है लंग्स के अंदर. ठीक है. दीज ब्रोंकाइज आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. यहाँ पे 16 to 20 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, यहाँ पर सी शेप्ड है लेकिन इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है. ठीक है. सो trachea divides into primary bronchi, secondary bronchi and tertiary bronchi, and tertiary bronchi divides into a minute opening which we call bronchioles, and these bronchioles ends into a specialized structure which is known as alveoli. Lungs are nothing but the main respiratory organs. They are spongy and highly elastic so that they can expand when they get filled with air. These are the main respiratory organs. Now, these main respiratory organs are covered by a double membrane structure which is known as pleural membrane. These pleural membrane have a space in between them, and this space is known as pleural cavity. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लेयर, इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पर ये जो लेयर है ये कहला देगी, ये लेयर जो कहलाएगी, ये मेम्ब्रेन जो क्या कहलाएगी, प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाएगी. और इनके बीच में जो गैप मौजूद होगा, दिस गैप विल बी कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी एंड प्लूरल फ्लूइड which avoids the friction of membranes, that membrane. Each lung is divided into lobes. The right lung, which is bigger, and it is divided into three lobes. The first lobe is known as superior lobe. The second one is known as inferior lobe. The second one is known as middle lobe, and the third one is known as inferior lobe. Likewise, the left lung is divided into two lobes. The first is known as superior lobe, and the second one is known as inferior lobe. Left lung is smaller than the right one. Each lung
has a terminal bronchioles ending in bunch of air sac-like structures which we call alveoli. This we call alveoli. This is a sac-like structure जो बंच के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. बंच का मतलब होगा दैट ग्रेप्स वगैरह जो होते हैं, अंगूर का गुच्छा किस तरीके से मौजूद होता है, उसी तरीके से यहाँ पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर का भी गुच्छा मौजूद होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्वीओलाई, जो कि 10 से 12 के नंबर में होते हैं. हियर अल्वीओलाई, थिन वॉल्ड lobulated structure present in a bunch. Thin walled lobulated structure which is present in a bunch. ये जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ अगर आप ध्यान दें, ये कंडीशन, ये यहाँ का इनलार्ज हिस्सा ये बताया हुआ है, दिस, ये ठीक है, ये हिस्सा, ये स्ट्रक्चर ये कहलाता है अल्वीओलाई. इट इज़ थिन वॉल्ड, इसकी जो वॉल होती है वो बारीक सी होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ थिन वॉल्ड. ठीक है, ये जो अल्वीओला है, these alveoli are provided by a network of capillaries of pulmonary vein and pulmonary artery. कैपिलरीज कहते हैं बारीक ब्लड वेसल्स को, माइन्यूट ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं कैपिलरीज. यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ देखिए, these are blood vessels which are very minute in according with these two blood vessels. तो these layer or these blood vessels are known as capillaries. These are known as capillaries. Pulmonary artery and pulmonary vein. Pulmonary word इसका मतलब ये होता है कि वो जो ब्लड वेसल है, आर्टरी है या वेन है, वो ब्लड लंग्स को सप्लाई करेगी. पल्मोनरी, जहाँ पर पल्मोनरी नाम आएगा वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन. ये आर्टरी है और ये वेन है. ठीक है, these alveoli are highly elastic and their wall is made up of single layer of squamous epithelium. ये किससे बना हुआ है? इसकी जो लेयर है, इसकी जो वॉल है, it is made up of single layer of squamous epithelium. Around 700 million alveoli are present in lungs. कितने alveoli present हैं? 700 million alveoli are present. So that हर बॉडी के पार्ट का जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके. That's why the large number of air alveoli are present here. Now here if I draw a line here, ये जो line है, this line divides the body into two half. The upper half which is present here, the upper half, it is known as thoracic region. It is known as thoracic region. The lower part, it is known as abdominal region. It is known as abdominal region. There is a muscular septum in between them. Here in next picture you can see there is a lining in between the abdomen and there is a lining between the abdomen and the thoracic region. This lining, this muscular septum is nothing but a diaphragm. It is known as diaphragm. Muscular septum that separates thoracic and abdominal cavity. So these are the cavities, abdomen and the thoracic cavity. These two cavities are divided or separated by a special structure, a muscular septum which is known as diaphragm. It is dome shaped. Dome shape होता है इस तरीके से. It is dome shaped. When in relaxed condition, जब रिलैक्स कंडीशन में होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो वो कैसा होगा? डोम शेप में होगा. एंड इट बिकम्स फ्लैट. दिस बिकम्स फ्लैट. ये हो गया फ्लैट. ठीक है, कब फ्लैट कब होगा? व्हेन दे आर, it becomes flat when they are contracted condition, when they are in contracted condition. ठीक है, तो ये है डायफ्राम, ये है अल्वियोलाई. नेक्स्ट पार्ट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. Mechanism means how the respiration is going to take place, and this mechanism of respiration, it includes the following process. Number one, it includes breathing. Number two, it includes external respiration. Number three, internal respiration. And number four, cellular respiration. These are the four processes which are included in mechanism of respiration. Let's start with one by one. Number one is breathing. ब्रीदिंग, एज यू नो, अमल तनफ्फुस जिसको आप कहते हो ब्रीथ करना. तो ब्रीद आउट मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना. ब्रीदिंग इज अ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द लंग एंड द एटमॉस्फेयर. इट इज अ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द lungs and atmosphere, and it includes two processes. The first process is known as
इंस्पायरेशन, यहाँ पर दिस इज इंस्पायरेशन एंड द सेकंड वन इज नोन एज एक्सपायरेशन. ओके, इंस्पायरेशन will I'll show you the video. Inspiration, during inspiration the atmospheric air is taken into the lungs. Here you can see the atmospheric air is taken into the lungs. Okay, it occurs due to the pressure gradient which occurs between the lung and the atmosphere. अब pressure gradient, what is pressure gradient? इसका मतलब क्या है? There is a difference between the pressure inside the lung and the pressure outside the lung, or you can say the pressure present in atmosphere. So atmospheric pressure and lung pressure, इनके दरमियान जो फ़र्क होता है उस फ़र्क की बुनियाद पे ये जो एयर है वो एयर आपके लंग्स के अंदर आने वाली है. इट इज़ एक्टिव प्रोसेस, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच डायफ्राम बिकम्स फ्लैट. अब यहाँ पे देखें डायफ्राम क्या हो रहा है, यहाँ देखो डायफ्राम बिकम्स फ्लैट. कैसा हो रहा है? फ्लैट हो रहा है. अब एयर जब अंदर आ रही है, when the air is getting inside, you can see there is a expand in rib cage, there is a expandation in rib cage, expand हो रहा है. so जब expand हो रहा है that means the volume, that means just a second ना. okay, the volume is increasing when there is a expand here. When this expand, there is an increase in volume. When there is an increase in volume, there is a decrease in pressure. When there is an increase in volume, there is a decrease in pressure. So here the pressure in lungs decreased. The pressure in lung decreased. अब यहाँ पर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है. फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन. Respiration takes place by diffusion, and diffusion is nothing but movement of gases from its higher concentration to the lower concentration is known as diffusion. Okay, अब यहाँ पर देखें आप प्रेशर कहाँ कम है? लंग्स के अंदर. प्रेशर कहाँ ज़्यादा है? एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर. तो जो प्रेशर ज़्यादा जहाँ पर है वहाँ से एयर अंदर की तरफ आ रही है. दिख रहा है? यहाँ से एयर अंदर की तरफ आ रही है और यही प्रोसेस आपका कहलाता है इंस्पिरेशन. क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन. When the atmospheric air is taken inside the lung, that process is known as inspiration, and it occurs due to the difference between the pressure gradient in lung and the atmosphere. Okay, exactly opposite phenomena happens in expiration. In expiration, when the gases are taken outside the lung, there is a decrease in volume. There is a decrease in volume in lungs. There is a thoracic volume जो है decrease होता है, and the pressure inside the lung increases. The pressure inside the lung increases. Now, ठीक है, the pressure inside the lung increases. अब प्रेशर कहाँ ज़्यादा हो गया? लंग्स के अंदर. प्रेशर कहाँ कम हुआ? सराउंडिंग के अंदर. क्यों यहाँ कम हुआ? बिकॉज यहाँ पर बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स के ज़रिए दोबारा से लंग्स के अंदर आ गई, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर और ज़्यादा हो गया. फिर से यहाँ डिफ्यूजन होगा. डिफ्यूजन का मतलब क्या है? ज़्यादा से कम की तरफ. तो ज़्यादा कहाँ है? अब लंग्स के अंदर. कम कहाँ पर है? सराउंडिंग मीडियम के अंदर. सो द एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू द आउटसाइड. ये प्रोसेस कहलाता है एक्सपायरेशन प्रोसेस. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन प्रोसेस. ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द एयर इज गिवन आउट of the body. So these two processes are included in breathing.
inspiration and expiration. Inspiration means taking the atmospheric air into the lungs, and expiration means expelling the carbon dioxide which was collected from all the body parts during the process. ठीक है.